Shanti, Shanti, Shanti. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid. Sri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Rameshwar Teliji, I rise to lay the papers listed against his name in today's revised list of business. Reports of the Department Head Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Sri T.G. Venkatesh. Respected Chairman, sir, Namaste. I rise to present the following reports in English and Hindi of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. 310th report on functioning of central libraries in the country. 311th report on creation of regulatory framework for protection of historical sites and monuments. 312th report on review of Central Road and Infrastructure Fund CRIF works. 313th report on promotion of Indian tourism in overseas markets. Role of overseas tourist officials and Indian embassies. Thank you, sir. Report of the Joint Committee on Officers of Profit, Sri Vijay Sai Reddy. Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the 4th report of the Joint Committee on Office of Profit as listed against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Report of the Department Head Parliamentary Standing Committee on Energy, Sri Sanjay Seth. Hey. Sri Ajit Kumar Bhuyan. हाँ अजित कुमार जी. Indian English versions of the Standing Committee on Energy subject to findings of faith in the renewable energy sector as listed against my name in today's list of business. Okay. Honorable members, yesterday Rajya Sabha witnessed a disruption-free proceedings after a long gap. It was delightful to watch quality debate on the motion of thanks to the President. Debate yesterday were marked by effective assertion of the achievements of the ruling party on one side and the contestation by opposition members on the other side. This is the advantage of smooth functioning of the House. I hope this spirit will continue to prevail for the remaining part of the session and also for the future. There is a notice under 267 for which already I have given my decision yesterday about Pegasus, Sivadasan. I am not accepting it. Then matters to be raised with the permission. 0 hour. Sri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, केवल 2 मिनट. Possible less than that. मेरा 0 आवर रामसर साइट से जुड़े हुए कांवड़ झील के संबंध में. बिहार के बेगूसराय के मंझौल में ये कांवड़ झील है. मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि 20 अक्टूबर 2020 को इस झील को रामसर साइट में शामिल कराने में सफल रही. रामसर साइट एक समझौता है जो ईरान के एक सिटी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जो 1971 में हुआ था. इसमें 171 देश शामिल है. 1975 में लागू हुआ. दुनिया के लगभग 2400 ऐसे साइट्स जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि हैं, उसका हिस्सा है. भारत के सिर्फ 47 ऐसे क्षेत्र इसके हिस्सा है. उसमें जो कांवड़ झील है, इसका जो क्षेत्रफल है वह बाकी झीलों की तुलना में 3 गुना अधिक है. लगभग 2400 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे भरतपुर का जो अभयारण्य है उससे 3 गुना अधिक है. लेकिन उस कांवड़ झील में जिसमें 59 प्रकार के विदेशी पक्षी आते हैं, 107 प्रकार के देश के भीतर के पक्षी आते हैं, उसका विकास नहीं हो पा रहा है. वो यूं ही पड़ा हुआ है. उससे एक हानि वहां के किसानों की भी हो रही है. जो लैंड डी नोटिफाई होना चाहिए वो नहीं होने के कारण किसान न उस भूमि का उपयोग कर पा रहे हैं, न बेच पा रहे हैं. दूसरी तरफ से जो यह क्षेत्र सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. भगवान बुद्ध का एक स्तूप है, जो स्तूप बहुत ऐतिहासिक है. भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था. तो मुझे आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है
कि जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया, जिसमें भारत के सिर्फ 47 देश हैं जबकि ब्रिटेन के 147 कंट्री हैं, तो उसके विकास के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन तीनों में तालमेल बैठाकर इसको राष्ट्रीय स्तर पर वो स्थान दिया जाए जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैधानिक दृष्टि से लिया है। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा Honorable and Chairman, also Dr. Amar Patnaik, Sujit Kumar are there. sir, I'll be brief, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो उड़ीसा में है, इसके बारे में चर्चा के बारे में है। माननीय, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने 3 बार चिट्ठियां लिखी केंद्र सरकार को और आग्रह किया कि लगभग 6 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़ने चाहिए आवास पोर्टल के ओपन होने से। और ये 6 लाख घर जो है मान्यवर, ये ज्यादातर आदिवासी भाई बहनों का है जो कि शेड्यूल्ड एरियाज में रहते हैं, वेस्टर्न उड़ीसा, साउथ उड़ीसा और केबी के जिलों से हैं। मगर 3 साल में आज तक जो है आवास पोर्टल खोला नहीं गया प्रधानमंत्री आवास योजना का। दुख की बात यह है मान्यवर कि इसी साल जनवरी 13 को कर्नाटक के लिए आवास पोर्टल खोला गया, जिससे कि वो लोग 25 लाख घरों को अब जोड़ सकते हैं। बट 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के अनुरोध के बाद भी अभी तक ये जो 6 लाख घर हैं ये जुड़ नहीं पाए हैं। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है सरकार को कि आवास पोर्टल प्रधानमंत्री आवास योजना का खोला जाए और जैसे कर्नाटक के लिए 25 लाख घर अलॉट किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, वैसे ही उड़ीसा के आदिवासी भाई बहनों के लिए ऐड किया जाए। डॉक्टर अमर पटनायक। Dr. Amar Patnaik. I'll just supplement to what Honorable Member Dr. Sasmit Patra said. So as per the 2011 census, Orissa has 9.20% of its population belonging to scheduled tribes, just after Madhya Pradesh and Maharashtra. And as he said, it is these people who are being affected by denial of addition of 6.65 lakh houses to the Awas portal. So as far as Orissa's performance is concerned, as for the National Institute of Public Finance and Policy, the level of satisfaction with monetary assistance is the highest in Orissa in PMOA houses. The level of construction of flooring is the best in the country, sir. So despite all these measures, and despite raising this issue by me and by my party people, sir, repeatedly in this house for the last 2.5 years, so this has not been allowed, but a stepmotherly treatment has been given to Orissa by allowing it to Karnataka, sir. Right. Thank you, sir. Sujit Kumar, associate, time nahi hai. Sujit ji. I'll quickly supplement what my colleagues have said and strongly urge the government to show a non-partisan attitude, and what they have done for Karnataka, similar steps also should be taken for Odisha, and the Awas portal should be open. Thank you. Singh Gohel. सभापति महोदय, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि लाखों लोगों की भावना को यहां रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मान्यवर, कच्छी भाषा इंडो आर्यन एक ऐसी भाषा है जो कच्छ के अलावा ईस्ट अफ्रीका के केन्या, कोंगो, साउथ अफ्रीका के कई देश, इंग्लैंड, अमेरिका और देश के कई शहरों में जहां कच्छी लोग जाके बसे हैं वहां कच्छी भाषा बोली जाती है। मान्यवर, कच्छ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है या एरिया है जिसका 45,674 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। देश के किसी राज्य छोटे देख लो तो उससे भी बड़ा ये एरिया है। और ये ऐसा कच्छ एरिया है कि जहां जो सबसे बड़ी 5 हड़प्पन संस्कृति आई हुई है वो धौलावीरा वहां पे आया हुआ है। व्हाइट रण देखने के लिए, हम व्हाइट डेजर्ट देखने के लिए वहां जाते हैं। मान्यवर, ये कच्छ के लोगों की भावना को देखते हुए जो संविधान की 8वीं सूची में कच्छी भाषा को इंक्लूड किया जाए, ये बात बार बार कच्छ के लोगों ने रखी है। मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान की 8वीं सूची में कच्छी भाषा को ऐड किया जाए। धन्यवाद। 2 शब्द कच्छी भाषा में बोलिए जी। 2 शब्द बोलिए कच्छी भाषा में। किए आयो, that's we say that how are you, किए आयो, that's a कच्छी लैंग्वेज, एंड कच्छी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट भी मान्यवर कच्छी भाषा की स्क्रिप्ट भी डेवलप हुई है। ठीक है, मजा में। प्लीज श्री डॉक्टर Santanu Sen. Good morning, one and all. I would like to raise an issue of, sir, I am from Lok Sabha. I would like to raise an issue of immense international importance. Sir, as a COVID warrior, I often search the international data through WHO site.
on 30th of January, while searching the international data through WHO COVID-19.int, I have seen that map of India was showing blue colored, and surprisingly the Jammu and Kashmir was colored separately. When I was clicking on the blue part, it was showing the data of India, but surprisingly when I was clicking the yellow part, it was showing the data of Pakistan. And to my utter surprise, I have noticed that one part of the Jammu and Kashmir was separately colored once again, and when I was clicking that part only, it was showing the data of China. Not only that, I have seen that in that particular map, our state of Arunachal Pradesh has also been demarcated very separately. Sir, I think our government should have been much more vigilant in this particular issue. Especially we have seen when our government is so much proactive in purchasing Pegasus for spying his own cabinet minister and opposition leader like our leader and party general secretary Abhishek Banerjee. Thank you. See, Jaishankar ji, take note of it. Sri M. Shanmugam. Yes, sir, from Lok Sabha. Where are you? From Lok Sabha, sir. Okay, please. Sir, thank you very much, sir. I am raising the gratuity. Gratuity is the social security scheme and the terminal benefit of the government employees. You can sit and speak also. If you are comfortable standing, I have no problem. Government employees also. The 7th Central Pay Commission has enhanced the ceiling of gratuity 20 lakhs from 1/1/2016 for the government servants. However, in persistent demand from the workers for payment of gratuity on par with the government employees, the Payment of Gratuity Act was modified by issuing notification only on 29th March 2018 that the amount of gratuity shall not exceed 20 lakhs, but it is done prospectively instead of from 1/1/2016. Hence, the workers who retired during the intervening period 27 months and whose eligibility of gratuity is more than 10 lakhs, their gratuity is restricted to 10 lakhs. For earning gratuity of 10 lakhs, the worker should at least drawing salary of 57,777. And for getting 20 lakhs, his salary should be above 1,15,550 per month. Therefore, there will be a very few workers or employees who are entitled for the gratuity ranging between 10 lakhs to 20 lakhs. Therefore, I demand that the ceiling limit of gratuity should be enhanced to 20 lakhs during the intervening period of January 2016 to March 2018. Okay. It would also not impinge in the finance of the companies, since there will be a very few people left. Even some employers are also ready to pay enhanced gratuity as they will get the tax relief, but since the ceiling has been fixed, they are not able to do so. Hence, I request Honorable Minister of the Labour to take initiative by notifying the provisions of the intervening period also. Thank you, sir. Sri Alamaram Karim. Respected Chairman, I would like to raise an important issue related to the state of Kerala. Kerala has proposed a semi-high-speed rail corridor from Thiruvananthapuram to Kasaragod called the Silver Line. This double-line rail will connect both ends of Kerala within 4 hours. The present duration of transport is 10 to 12 hours. Trains can run with maximum operational speed of 200 kilometers per hour, carrying around 80,000 passengers per day. Feasibility study of the project was conducted in 2019, and Railway Board has issued in principle approval for the project on 17/12/2019. Detailed project report of Silver Line was submitted to the Ministry of Railways in June 2019. So preparatory work for land acquisition is going on. Silver Line is a green transportation. It will be reducing more than 2.8 lakh tons of carbon dioxide per day. Right. It will create more than 50,000 direct and indirect employment during the construction phase and 11,000 direct and indirect employment during the operational phase. So I request through you, sir, immediate the permission. No.
No intervention. No intervention. No, let me complete, Okay. sir. Please. Let me complete, sir. Nothing wrong. Everyone has got a right to have their opinion. Yes, yes, yes. Sir, I have not completed, sir. No, no, I request the government to give permission immediately. That is my Right. request. Sir, without the feasibility study, without the environmental impact, if the government of Kerala is bulldozing this project, entire people of Kerala is against this project, sir. Please. I will. Please. Let there be no controversy in the House. Let the government study this. Let the government study this proposal in all its pros and cons and take a final view. Yeah, please. Right. No, please. Okay. Sri B. Denge Yadav, please. ऐसा बिना परमिशन बोलना नहीं. चेयरमैन साहब तो बिना परमिशन गए तो हाई स्पीड है इसलिए थोड़ा क्रश करेगा थोड़ा. थैंक यू चेयरमैन साहब. लिंगయ్య नमस्कारम सर. प्लीज नमस्कारम తెలుగు. Sir, conducting of census for the persons belonging to OBC in the country, sir. ये మొత్తం భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ఓబీసీలు వెనకబడ్డటువంటి కులాల వాళ్ళు 70% దాకా 60% దాకా ఉన్నారని లెక్కలు ఉన్నాయి సార్. ఈ నేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఆ రోజు చర్చల్లో ఆనాటి హోంశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కూడా సభలో స్పష్టంగా బీసీ కులాల యొక్క జనాభా లెక్కలు చేపడతామని చెప్పి ఆగస్టు 31, 2018లో వారు చెప్పినారు సార్. బీసీ జనగణన కోసం రోడ్ మ్యాప్ కూడా తయారు చేస్తున్నామని చెప్పి ఆ రోజు వారు ప్రకటన చేయడం జరిగింది సార్. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రకటన లేదు. ఇటీవల కేంద్రం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి అఫిడవిట్ లో బీసీ జనగణన చేయటం సాధ్యం కాదు అన్నదని చెప్పి అది ఒక సాకుతోటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఓబీసీలకు వర్గీకరణ జరపడం లేదని మా ఆలోచన సార్. మరి గతంలో బ్రిటిష్ పాలకులు ఉన్నప్పుడు నిర్వహించిందే తప్ప ఈ జనగణన ఈ యొక్క లెక్కలు ఈ స్వతంత్రం వచ్చిన 75 సంవత్సరాల్లో ఈ ఓబీసీల యొక్క మరి జనాభా లెక్కలు చేయకపోవటం ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిదర్శనం సార్. తమ ద్వారా నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే ఈ దేశంలో జంతువులకు కూడా లెక్కలు కడుతున్నారు ఎన్ని జంతువులు ఉన్నాయని చెప్పి. కానీ ఓబీసీలు ఎంతమంది ఉన్నారని లెక్కలు కట్టకపోవటం దురదృష్టం సార్. అందుకని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికీ తమిళనాడు, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేసింది సార్. ఈ ఓబీసీల లెక్కలు జరగడం వల్ల ఓబీసీ విద్యార్థులకు ఉద్యోగస్తులకు అన్యాయం జరుగుతుంది సార్. తమరి ద్వారా భారతదేశం అంతా కూడా ఈ ఓబీసీల యొక్క జనాభా లెక్కలు చేపట్టాలని సభ ద్వారా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన తమను కోరుతున్నారు. Demand to conduct OBC census in country. Those K money, whoever want to associate, send their names. Those K money. Where are your money? Please, for gallery 4. So the plight of the rubber farmers who are See the mic, other mic, next one. Mic to Mr. Those money. No, go to the other mic. There's some. Right. Yeah. Now you are on the right side. Okay. The plight of the rubber farmers, who are the backbone of Kerala economy, is in distress and in pathetic conditions, sir. Mainly because of the import of natural rubber and in falling price of natural rubber, and also add to this the COVID pandemic, sir. Add to this, the government of India has decided to repeal the 1947 Rubber Act to enactment of Rubber Promotion and Development Bill 2022, to which they were published in a draft in the website and the domain, which was released on January 10th, and for the suggestions and comments from the public and also from the stakeholders till January 21st. So going through the bill, it is learned that it's detrimental to the farmers. This is similar thing is done for the Spices Board Act also the same period. Both these spices and the rubber farmers, if you go through the draft, is detrimental to the farmers. And as you know, the rubber board was established to assist the farmers.
assist the farmers, and actually the powers of the rubber board is taken away and no support has been given to the farmers. So my request to the government of India is, number one, that the draft which is established, at least published in the website, only minimum time of only 12 days being given. No publicity was given. So please extend the time from today onward for 30 days, and publicity should be given for the public to give the comments. Second, the government of in the bill, the rubber and the spices should be declared as a agricultural produce, and a mechanism should be drafted by the board, both by the spices board and the rubber board, the cost of production every 2 years. Accordingly, a minimum support price should be established. Thank you, Joseph. Subhash Chandra Singh. Subhash Chandra. Whoever is associating, send the name. चेयरमैन सर मु सर आपण को ये हाउस रे अनुरोध करथि आपण को जरिया रे अनुरोध करथि जे केंदुलिपि वर्कर 10 लाख वर्कर ओडिसा रे वेस्टर्न ओडिसा पश्चिम ओडिसा रे प्योरली ट्राइबल एंड एसी वर्कर जो 80% वुमेन वर्कर अछि सर सेतरे से माने जीएसटी सर 18% हे जिबा पर रे 5% आगुर थिला से माने 200 कोटी टंका ओडिसा सरकार लूज करछि प्रति वर्ष जीएसटी जरिया रे तांकर दैनिक मजूरी सर 200 टंका लेखा बढ़ी पारंता केंद्र सरकार जीएसटी फाइनेंस हॉनरेबल मिनिस्टर शुड कंसीडर जे केंदुलिप वर्कर नॉट ओनली कन्फाइंड इन ओडिसा सर पड़ोसी राज्य सर मध्य प्रदेश हो कि छत्तीसगढ़ हो सर ए सब राज्य मध्य संपृक्त अछि ताको विचार को निया जाई तुरंत जीएसटी रिडक्शन करा जाऊ सेही भली भाबरे एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी इंक्रीजेस द सेल्स प्राइस ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट ओडिशा पृथ्वी रे परिचय होची हैंडलूम रे एवं ता जा को जाए संबलपुरी साड़ी तार प्रोडक्ट रे तापरे एपरी जीएसटी बसची सेल्स एवं सब प्रोडक्ट परे सूता परे रंग परे एवं अठा परे ताकू विचार करा जाऊ 2 3 नंबर होची विल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कंसीडर इंट्रोड्यूसिंग डिग्री कोर्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट बरगढ़ रे सर गोटे डिप्लोमा कोर्स अछि ताकू डिग्री कोर्स रे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बरगढ़ को डिग्री कॉलेज रे मान्यता दिया जाऊ ये तीनटा विचार को ना आपण जरिया रे मो विनम्र निवेदन करछि ओडिसा रो बड़ परिचय होछि हैंडलूम एवं संबलपुरी एवं केंदुलिप वर्कर मान समाज को विचार को निया जाऊ अपने अपन मातृभाषा उत्तम कह दे he was advocating that GST should not be there on Tendulip's collection. Okay. Dr. Vikas Mahatme. Thank you, Chairman, sir. मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं जिसको सिन गुड्स कहते हैं जैसे कि शराब है अल्कोहल या टोबैको तो 2019 एम्स की स्टडी है उसमें शराब का जो 14.6% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दिस स्टेकिंग यूजिंग अल्कोहल का सेवन करते हैं वैसे ही 27 करोड़ लोग तंबाकू का भी सेवन कर रहे हैं और दुख की बात यह है कि दिन ब दिन इसकी संख्या बढ़ रही है सभी सरकारें इसके खिलाफ यानी ये संख्या बढ़नी नहीं चाहिए इसलिए काम करती है लेकिन इसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है हाल ही में ये जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है ये जो टैक्स कलेक्ट होता है इस सीन गुड से तो हाल ही में ये बढ़ना चाहिए टैक्स कलेक्शन इसलिए दिल्ली और महाराष्ट्र में शराब लीकर जो है इसके लिए कुछ खास उपाय योजना की है जैसे शराब घर घर तक के होम डिलीवरी की जाए वैसे ही हाल में महाराष्ट्र में लीकर मॉल्स में अवेलेबल होगी वैसे 1000 स्क्वायर फीट शॉप्स में भी अवेलेबल होगी ये बताया गया है तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम कहते हैं कि शराब से एडिक्शन होता है लोगों को लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू द टैक्स कलेक्शन अमाउंट बाय दिस प्रोडक्ट क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है तो मेरा ये कहना है कि जो शराब अवेलेबल है मॉल्स में वगैरह तो उसकी वजह से ये मॉल्स में अवेलेबल कर रहे हैं तो इसके बजाय जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको वो यदि शराब कम करने के लिए उसका एडिक्शन कम करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए जनजागृति के लिए और साइकोलॉजी मनोविकास के लिए खर्चा करे
तो इसका यूज कम होगा और कितने % से लोगों का यूज कम हो रहा है इसके ऊपर। राइट महात्मा जी, राइट महात्मा जी। क्या प्रियंका जी? He spoke about the state of Maharashtra, sir. Okay. Sri Dr. L. Hanumantaya. Dr. L. Hanumantaya, please. Yes, sir. Sir, the University Grants Commission has outsourced the examination of regional languages to National Testing Agency. Sir, very recently on 26/12/2021, the National Testing Agency conducted the examination of Kannada to become eligible for lecturers in Karnataka, sir. Sir, out of 100 questions, only 10 questions were in Kannada and 90 questions were in Hindi. So all the students they were not happy with that, they complained against them. Sir, after some time, they uploaded one more question paper where that was also not correct. Sir, the system, it was online examination, sir. The system did not going well. They could not even log in, all the students. Some students could log in, some students could not do that. And afterwards, sir, even 90 questions were not in Kannada and they did not answer. So it was not complete. The examiner said, you can go home, it will be completed. Sir, after the result, the problem is all these questions which were not able to log in came as not completed. And some questions which was log in and answered also came as not completed. So, sir, the students, they have to apply for correction. They have to pay 1,000 rupees per question, sir. Sir, how the poor students who are not even employed can apply? Right. 50 students, 50,000. Not one, please, sir, 50,000. let us do justice and to the issue. I request the government. Let us do justice to the issue. Sir, please, one minute. Sir, please, I request the government. I have not permitted you. 1 minute, sir. Sir, I request the government to cancel this examination and who is the minister? MOS is there? So they please, you want solution or you want to just... So he raised an issue important. I am asking the minister to look into that. Minister stood up. So let him get it examined and then get back. Sure. Huh? Sure. Today. Right. Then Dr. Rami Agnik. Time. Thank you, sir. I would like to raise a very important issue regarding malnutrition among children, sir. I would request the Honorable Minister for Women and Child Development to look at the data. They have estimated about 70.76 lakh children under the SAM, that is severely acute malnourishment, and almost about 15.76 lakh children under the moderate acute nourishment. But sir, the minister should take into consideration children are the most neglected section of society. Thank you, Food system has done injustice to them. Thank you, ma. Honorable members, I have two observations to make. One is that Sri K.C. Venugopal and two more members have given a notice of privilege against the IT minister. I am examining it. Once I examine, I will ask once I examine it, then I have to seek the clarification of the minister. Then we'll get back to you, Venugopalji. The second observation is, it was brought to my notice that time allocation has been done by this Business Advisory Committee, 12 hours and 11 hours. So now once the time is allocated, parties have been informed about the time. And the respective parties have been told to give names accordingly and also, if possible, mark the time they want to give each member. But I am told that they have sent it, but they are not following it. The problem will be if some speakers take more time and then leaves less time to their colleagues, there will be a practical problem. I don't want to name any party. I request all the leaders, please see to it that whatever time you allocated, you people have allocated, please see to it that it is followed by one and all. Now the question hour. Question hour, Sri Brijlalji, question 16. Brijlal. Question number 16.
श्री ब्रिजलाल जी, क्वेश्चन नंबर 16 सर। क्वेश्चन नंबर 16, माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखिए। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स योजना के अंतर्गत देश में कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें कितना बजट आवंटित किया गया? महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय को ये अवगत कराना चाहूंगा कि 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से जिस तरह से हर एक क्षेत्र में उन्होंने विकास के लिए निरंतर प्रयास किया, बिल्कुल वैसे ही खेल क्षेत्र में भी और कैसे खेल को बढ़ावा दिया जाए और विश्व पटल पर और कैसे भारत के चित्र को और उज्जवल किया जाए, इसका निरंतर प्रयास उन्होंने करता रहा। और उसीलिए 2014 में ही टारगेट ओलंपिक पोडियम का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत हर एक खिलाड़ियों को, जो भारत की एलिट एथलीट है, उन लोगों को हर प्रकार की सुविधा दिया गया। और 2014 से बाद हम लोगों ने देखा कि खेल क्षेत्र में कैसा निरंतर एक पॉजिटिविटी आया और उसमें कितना परिवर्तन आया। और उसका परिणाम का स्वरूप महोदय हम लोगों ने देखा कि जब 2020 और 21 में कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहे थे, भारत भी उस समय कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत हर एक एलिट एथलीट को हर प्रकार की सुविधा दिया गया और उसके तहत उसका परिणाम के स्वरूप हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में उनका उत्तम प्रदर्शन से भारत की जो झंडा है उसको विश्व पटल पर ऊंचा लहराया और एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान स्थापित किया। महोदय, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शिता है उसका ही फल है। प्लीज माननीय मंत्री जी, सवाल पूछने वालों से और उत्तर देने वाले माननीय मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि कृपया ब्रीफ हो, दूसरों को भी मौका दें। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि और सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज, सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। टॉप स्कीम के तहत नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। महोदय, अभी तक टॉप स्कीम के तहत लगभग 452 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। महोदय, अभी तक 198 एलिट खिलाड़ी, जिसमें पुरुष एवं महिला हॉकी टीम के लगभग 36 जो खिलाड़ी है उनको शामिल किया गया है और उनको टॉप के कोर जो स्कीम है उनमें ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है और 254 अपकमिंग बेस्ट जो एथलीट है उनको डेवलपमेंट स्कीम में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कस्टमाइज ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। महोदय, माननीय सांसद जी ने पूछा कि इसका क्या बजट होता है। इसका कोई भी बजट का लिमिट नहीं होता है। कोई भी खिलाड़ी के लिए उनका उत्तम प्रदर्शन के लिए जितना बजट की प्रयोजन होता है उतना इसमें आवंटित किए जाते। महोदय, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सर कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय खिलाड़ियों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से विकसित कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से इसमें जवाब चाहना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय आदरणीय सांसद जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने मेरठ, लखनऊ, सोनभद्र, प्रतापगढ़, महाराजगंज, एटा, फर्रुखाबाद, सदर आदि मिलाकर कुल 24 जो है मल्टीपर्पज हॉल लगभग 125 करोड़ की लागत राशि से खेलों की बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। महोदय, और उसके साथ साथ महोदय वाराणसी में 2
सहारनपुर में और मुजफ्फर मिलाकर 4 सिंथेटिक ट्रैक एवं मीरठ में एक हॉकी एस्ट्रोट्रैप का निर्माण कुल 28 करोड़ की लागत राशि से भी तैयार किया गया है। लखनऊ में एक रेसलिंग हॉल, स्पोर्ट्स हॉस्टल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कुल 31 प्रोजेक्ट खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत किया जा रहे हैं। थैंक यू। माननीय स्वपन दास गुप्ता जी, प्लीज। Sir, through you, I'd like to ask the Honourable Minister, MOS Sports, draw his attention to a very curious phenomena that while India has been doing exceptionally well and gaining medals in the realm of competitive sports, particularly in the Northeast and Assam, it's curious that the medal tally sometimes stops at the borders of Assam. Now, he is a Member of Parliament for Kuch Bihar, which is a bordering state of Bengal, which is bordering state of Assam. I would like to ask him why the facilities which were there for the Northeast somehow that doesn't get translated further eastwards, despite the fact that it is alleged that the state government gives generous grants to youth clubs. Are these for sports, and are you complementing their efforts? This is the question I'd like to ask. Thank you. माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर एक जो क्षेत्र है, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर एक क्षेत्र में खेल के विकास के लिए उनका जो सोच है, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी ने, उन्होंने 2021 का अक्टूबर में एक वर्चुअल मीटिंग रखा था जिसमें सारे प्रदेशों की जो खेल मंत्री है उनके पास से सुझाव मांगा गया था कि किस तरह से हम आपकी प्रदेश में आपका सुझाव क्या है और प्रपोजल भी क्या है, किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे जाके खेल की डेवलपमेंट कर सकते हैं। महोदय, इसमें लगभग सारे जो स्टेट्स है, सारे राज्यों ने अपना अपना जो प्रपोजल है, अपना अपना जो सुझाव है वो खेल मंत्रालय को दिया है। लेकिन महोदय, दुख की बात यह है कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल से अभी तक कोई भी प्रकार का प्रपोजल अभी तक नहीं आया है। महोदय, अगर आएगा तो इस पर विचार करें। थैंक यू। श्री सुजीत कुमार जी। Sir, in 2019, the government had sanctioned 110 crore to set up the National Center for Sports Science and Research. And the objective was to promote scientific methodology in the development and enhancement of sports infrastructure in the country. Sir, I would like the Honourable Minister to apprise the House what is the status of this institution and by when is it likely to be completed. Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, उसके लिए मंत्रालय काम चल रहा है इसका, और उसके लिए उचित समय पर विचार महोदय किया जाएगा। डॉक्टर वी शिवदास। Improve the infrastructure facilities in educational institutions in rural area. Whether government has any concrete plan to improve sports infrastructure facilities in educational institutions in rural India? Thank you. महोदय, ऐसी बहुत सारी जो है कि खेलो इंडिया के तहत हम लोगों का विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल का विकास करने के लिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो काम कर रहा है, और खेलो इंडिया के तहत बहुत सारा स्कीम है जिससे विद्यालय का भी जो खेल परिवेश है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 17, ऑनरेबल श्री एमबी श्रेयांश कुमार, प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माइक श्रेयांश कुमार जी, माइक प्लीज।
See, lobby number 4. Yes, it's working. So thank you. Please speak. So how many Gulf Indian workers benefited from the Indian mission? So Indian mission consulate efforts for settling the pending salaries and allowances of expatriates who had returned home due to COVID pandemic situations. So we don't have exact number of exact figure for the workers whose salaries are pending, but I wish to assure the member through you that today retaining employment, ensuring that wages are paid, ensuring welfare of workers, these have been very much the priority of our missions in the Gulf. From the highest level, we have been engaged on this matter, and we have been regularly talking to the governments of the Gulf at my level and at the ambassador's level. Thank you. Second supplementary. Sir, to a specific question about the representation from Kerala state, nothing has been mentioned. But sir, how much of Indian mission abroad spent during the last 2 years to assist and facilitate the non-resident Indians who suffer in foreign countries due to COVID situation? Indian Community Welfare Fund, during the COVID period, we spent 45.78 crores for the welfare of our citizens, mostly workers in the Gulf, during this period of the COVID. Honorable KJ Alphonse. Kerala survives on remittances from our workers abroad, and I think over 25% of entire remittance to India, foreign exchange remittance to India also comes from Kerala. So we have over 500,000 Keralaites have come back. Now, I don't find it feasible for the government of Kerala to rehabilitate these people because there are no employment opportunities in Kerala. I would like to know from the Honourable Minister, what is the steps taken by the government of India to get these people back to those countries so that they can get back to job? Thank you. Sir, I would like to inform the Honourable Member that we have engaged the governments of the Gulf. This engagement is led by the Prime Minister himself. In the course of the last 2 years, during the COVID period, Prime Minister has had 16 telephonic conversations with his counterparts, the leaders of the Gulf countries. I have visited the Gulf countries 13 times during this period. My colleague Muralidharan ji has been there 4 times. I have also had 27 telephonic meetings with our colleagues. Our objective is to get as many workers back there as possible, as many of them back in their old jobs. We have in Dubai also started an upskilling center for workers, and we are all the missions treat the welfare of workers as their #1 priority. Thank you. Honorable Elam Karim ji. Whether the government may bring a scheme for providing financial assistance to the families of deceased NRIs on abroad due to COVID? So we have a provision in the Indian Community Welfare Fund for responding immediately to situations, especially unfortunate situations like the passing away of people, which this usage of ICWF was expanded in 2017, and it has been a very useful mechanism for dealing with that. We have also encouraged in the Gulf countries, wherever we have had such unfortunate occurrences, for ex gratia payments to be made by the government or by the employers. Thank you. Sri Vinay Vishwamji. Sir, I may ask the Minister that whether there is a proposal or there is a possibility to see that somebody in the Indian missions abroad, in Gulf countries mainly, with Malayalam knowledge, be appointed to interact with the Malayali workers there, because there are large numbers. They face a lot of problems. They know only Malayalam, and their issues are so severe. Please question briefly. My question is there should be somebody in all missions in Gulf countries who can treat these poor Malayali workers with Malayalam language. It's a suggestion. Yes. Minister. Whether they can do it or not. Please. Sir, first of all, I would like to underline to the Honourable Member that we have workers from many states. I do appreciate
that a very large number of them are from Kerala, but there are workers from other states as well. In terms of what are the language skills of our staff, I cannot give him the exact number, but I can assure him that this common sense point that our employees, somewhere in an embassy, there should be employees who have knowledge of Malayalam. That is a point that has not escaped us, and we do find ways of dealing with that. Thank you. Question number 18, Honorable Sri John Brittas. Please. Sri John Brittas, not present. Mr. John Brittas? No. Minister? Honorable Minister? It is laid on the table of the House. First supplementary, Sri Prasanna Acharya ji. Sir, though it is a question regarding the appointment of women judges, my supplementary is regarding the total vacancies that is now prevailing in different high courts and Supreme Court in the country, and how many recommendations have already been made by the Collegium, and that is pending with the government, and in spite of the recommendation of the Collegium, judges are not being appointed. And sir, I think India is the only democratic country where the people's representatives decide their own salary. Of course, now the MP salary system has been changed, and the judges appoint their own successor. So, is the government considering to again bring any amendment in the law to suggest an alternative to the collegium system? Thank you, so that there will be transparency. Thank you. You have put three questions. Of judges. You have put three questions. Please. Sir, at this moment, we are very happy that out of the total 34 judges strength in Supreme Court, we have, for the first time, 4 women judges in the Supreme Court, and 3 women judges were appointed when I took over as the Minister for Law and Justice. Sir, out of total 1,098 judges in the High Courts, we have 83 women judges. I can give more explanation, but I would like to state only one thing, that we have been stressing time and again. Personally, I have been asking the Collegium, led by the Chief Justices of the Supreme Court and the High Courts, that while recommending the names for the appointment as the judges, preferences may be given to women and backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. Please, not allowed. Actually, he has put 3 questions. Yes, so but sir, if you permit, I can ask him to confine to one question, but still I will respond to the last point which he made. Government on its own deliberately never held up any appointment cases. Government has to do due diligence while appointing judges, because while appointing the judges, we have to ensure that he is fit to be a judge in the court. This is very important. And then all the cases which come to us has to follow through a process. Some of the names are with the Collegium in the Supreme Court. Some of the names are with the government in different stages. And this is a process, and it's a well-established process as per the Memorandum of Procedure. And we don't make any delay on our part just because we don't want to make any kind of judgment on our own while appointing the process, but only to look after the issue of appointing only the qualified judges. Thank you. Sri N.R. Elango, please. Coming from the state of Tamil Nadu, I am very happy to know the reply made by the Minister, Honourable Minister, that in Tamil Nadu, out of 75 honourable judges, 13 are women judges, and that's Tamil Nadu. But it is agonizing to see that there are 0 women judges in 5 states. It is also agonizing that most of the time the scheduled caste, scheduled tribe and backward classes persons, though very eminent, are deprived of their elevation. Apart from the reply that they are requesting... Please question. Apart from the question is, apart from requesting the High Courts, what are all the concrete steps are being taken by the government to ensure that there are due representation by these classes? Thank That's you. a question. Sir, I have partially mentioned in my earlier statement, there are no provisions of reservations for the appointment of judges in the judiciary.
But still we keep insisting that while we are talking about appointing quality judges, at the same time, we have to also ensure that preferences are given for the appointment of women judges as well as people belonging to backward classes, including scheduled castes and scheduled tribes. श्री रामनाथ ठाकुर, लोकसभा बैठकर बोले। रामनाथ जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट में महिलाओं और पिछड़े वर्ग और दलित लोगों की जज की संख्या कितनी है? सर, मेरे पास पूरा देश का फिगर है और मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं पटना के लिए। पटना हाई कोर्ट का सर टोटल अप्रूव जो जजेस का स्ट्रेंथ है 53 है, 53, और इस वक्त वहां कोई वुमेन जजेस नहीं है। ये थोड़ा से दुख की बात है, इसलिए हमने वहां के चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा है कि जो अगले नाम आएंगे पटना हाई कोर्ट से, तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ा दिया जाए ताकि सरकार को वुमेन जजेस को अपॉइंट करने में मदद मिले। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 19, श्री राम सकल जी। क्वेश्चन नंबर 19, माननीय मंत्री जी। मास्क उतार लीजिए। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय राम सकल। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में उत्तर में कहा है कि वर्तमान आकलन में पिछले आकलन अर्थात ISF 2019 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में 1440 वर्ग किलोमीटर वृक्षारोपण और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर वन तथा वृक्षारोपण को मिलाकर 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्शाई गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये आंकड़े पेपर सीमित, और जिस प्रकार से सरकार का करोड़ों रुपया लगा करके मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश में, खासकर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मिर्जापुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला मिर्जापुर वन कैमूर क्षेत्र जीव आता है। वहां उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से वर्ष 16-17 सवाल संक्षिप्त हो राम सकल जी प्लीज। करोड़ों रुपए लगा करके 200 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण पौधारोपण कराया गया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से वहां के आदिवासी समाज के द्वारा SC/ST के बाद पूरी जमीन जो वृक्षारोपण हुआ था वो कब्जा कर लिया गया। स्थानीय अधिकारी मिली भगत, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, कितना पैसा लगाकर जो वृक्षारोपण होता है उसके रखरखाव के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल बढ़िया। माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सवाल है, भारत में हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किए जाते हैं, और जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके जहां पर भी 1 हेक्टेयर से ज्यादा वृक्षारोपण है उसको इसके अंतर्गत अंकित किया जाता है और देश के फॉरेस्ट कवर का पूरी तरीके से मापन किया जाता है। और दूसरा जो फॉरेस्ट का एरिया के जो बढ़ने की बात है वो तथ्यों पे आधारित है, वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट है। जहां तक जो माननीय सदस्य ने मूल विषय उठाया है कि कुछ जंगली क्षेत्रों से पेड़ के कटने का या कुछ जगहों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के सफल नहीं होने का, मंत्रालय द्वारा उसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कैंपा, ग्रीन हाईवे पॉलिसी और बाकी पॉलिसी, राम सकल जी प्लीज आप बैठे, पॉलिसी के माध्यम से एक संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। जहां तक आप कब्जा करने की बात कह रहे हैं, अभी मिनिस्ट्री के द्वारा एक ग्रीन वॉच पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। उसमें जितनी भी अंकित शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा। आपके क्षेत्र में अगर कोई विषय है तो आप संज्ञान में लाइए, निश्चित रूप से हम उस पर कदम उठाएंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री और ब्रीफली संक्षेप में पूछे। अभी आप जो आपने आंकड़े दिया 4-5 स्टेट का दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है इसमें। पूछे क्वेश्चन तो। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत सभी राज्यों का विश्लेषण, सभी राज्यों में जो फॉरेस्ट बढ़े हैं या जहां पे फॉरेस्ट कम हुए हैं उसको पूरी तरीके से रखा गया है।
फॉरेस्ट जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो राज्यों के अंतर्गत होता है और इसलिए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको संभालता है। आपका कोई उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर स्पेसिफिक विषय है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। श्री जीसी चंद्रशेखर जी। Mike, sir, this is very important question. In Karnataka, Salumarada Timmaka, a 106-year-old notable environmentalist, Padma Award recipient, an inspiration to many, sir, who planted more than 8,000 trees in 65 years, raised 385 banyan trees on either side of the road between the Hulikal and Kadur to the stretch of 4 kilometers. She had faced health issues and many such people are finding difficulties. If there is any provision from the ministry to support such environmental activists. मंत्रालय के द्वारा पूर्व में भी एक लंबे समय से इको क्लब से लेकर अनेक पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से की जाती है और हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे के वृक्षारोपण के कार्यक्रम है, मंत्रालय द्वारा इस बात का विचार किया जा रहा है कि सभी स्कीमों का कन्वर्जेंस किया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह पे विभिन्न स्कीमों के चलने के कारण कई बार एक व्यापक रूप से जो दृष्टिकोण है वो नहीं आ पाता है। लेकिन हम मंत्रालय के द्वारा भविष्य में भी ग्रीन इंडिया मिशन में सभी स्कीमों के कन्वर्जेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि संयुक्त रूप से इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठन और जो लोग भी वृक्ष लगाने में सहायता देते हैं उनकी मदद ली जाए। मैं सांसदों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वृक्षारोपण ये हमारी आवश्यकता है, आपका भी सक्रिय सहयोग मिलेगा तो ये देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद मंत्री जी। डॉक्टर फौजिया खान जी, डॉक्टर फौजिया खान प्लीज। From Lok Sabha. हाँ प्लीज। Chairman sir, in the reply to the question it is said that the forest cover in India is 24.62%, when ideally it should be 33%, it is said. And the major expenditure heads, including the National Plan on Agroforestry Research, Afforestation Board, Forest Management, etc., have suffered a decline in this year's budget, sir. You have to put only one question, madam, and you have already put it. Please. I want to say that since the budget has declined, how is forest conservation going to be the essential part of the program for climate change? Since, sir, this has to be an integrated interdepartmental effort. Thank you. So what is the government going to do? Thank you, madam. You have to be brief. Thank you. माननीय सभापति महोदय, जहां तक हमारे फॉरेस्ट एरिया के कवर का प्रश्न है, हमारे यहाँ पर 3 तरह का फॉरेस्ट है। एक सघन वन है, एक मॉडरेट है और एक नॉर्मल बंजर जो वन है वो हमारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हमारे को देश का जो ट्री कवर है जो 30% बढ़ाने का हमारा दुनिया के सामने भी लक्ष्य है 33% करने का, उसका एक सबसे बड़ा समाधान है कि हमारे यहाँ पर वृक्षारोपण और ट्री कवर की संख्या को और स्थिति को बढ़ाया जाए। जहां तक भारत में फॉरेस्ट की स्थिति का बात है, भारत में जो सघन वन है, हमारे फॉरेस्ट के अलग अलग तरह के प्रकार हैं। कहीं पर हमारे जो पर्यावरणीय और भौगोलिक अलग अलग विशेषता है, उसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट हमारे देश के अंतर्गत है। सरकार के द्वारा इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से संरक्षित करने का, बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे देश में फॉरेस्ट के अंतर्गत 52 हमारे टाइगर रिजर्व भी हैं, जिसमें से आज भारत सरकार के सघन प्रयासों के कारण, पिछले 7 वर्षों के प्रयासों के कारण हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को उनकी अच्छी स्थिति के कारण इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी प्राप्त हुआ है और अभी दक्षिण के एक हमारे टाइगर रिजर्व को TY2 का भी दर्जा मिला है। लेकिन इन फॉरेस्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट के कवर एरिया को बढ़ाने के लिए जो जल के जो हमारे क्षेत्र है उनके आसपास भी सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। विशेष रूप से नर्मदा और उसके क्षेत्रों में सरकार इस बात का पूरा ध्यान ले रही है और संज्ञान लेके फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। श्री विकास महात्मे जी। सर, मेरा सवाल यह है कि वी शुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हाउ दिस revenue can be increased, and this is without decreasing the
forest cover, so that forest cover remains, but we get revenue from the forest. सर, माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके कारण जनजाति समाज के जो हमारे बंधु हैं, उन जनजाति समाज के बंधुओं की आय होती है। इसके लिए विभिन्न स्कीम और योजनाएं भी चलाते हैं। और मैं यहाँ पर सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की पूरी तरह की प्रतिबद्धता है कि फॉरेस्ट बिना वहाँ के जो हमारे जनजाति बंधु हैं उनके जीवन में उत्थान करे बिना हम फॉरेस्ट कवर को नहीं बचा सकते। सरकार माइनर फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस स्कीम को, जो जनजाति समाज का हमारा जनजाति मंत्रालय है और जिनके फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उनके साथ मिलकर पर्यावरण मंत्रालय काम कर रहा है। उनके जीवन, सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑनरेबल त्रिचू शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 20, सर। माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, while appreciating the well-informed, learned minister for the initiatives he has taken to reduce the impact of the air pollution on health and the measures taken for air quality management, I would like to know from him, sir, the ministry has introduced a new star rating system to the State Environment Impact Assessment Authority for granting speedy environmental clearances, and has placed high points for fast acceptance of proposals and penalties for the SIEAs which ask for additional documents. If the SIA asks for additional documents, penalty is imposed. I would like to know, sir, whether the ministry is aware of the negative impact this can have on giving out inadequately assessed environmental clearances. Thank you. मेरे विद्वान साथी बहुत अनुभवी पार्लियामेंटेरियन हैं। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न के संबंध में नहीं है। प्रश्न जो उन्होंने मेरे से पूछा है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल हेल्थ सिस्टम के बारे में है, लेकिन ये जो प्रश्न मेरे से कर रहे हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में है, जो मंत्रालय की एक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी मैं उत्तर के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, उन्होंने पूछा है कि हाँ, मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो एनवायरमेंट क्लियरेंस दी जाती है उसकी स्टार रेटिंग किस प्रकार से की जाए। ये हमारी तरफ से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए, एक निष्पक्ष तरीके से जो भी एप्लीकेशन आती है उनका मूल्यांकन किया जाए, ताकि जो भी निवेश के लिए लोग आते हैं उनको सुविधाजनक तरीके से हो जाए। इस सर्कुलर में किसी भी प्रकार से नहीं कहा गया है कि कोई रिलैक्सेशन किया जाए, लेकिन त्वरित एप्लीकेशन का निस्तारण करना, एप्लीकेशन को अनावश्यक न हटाना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आवश्यक है। दोनों ही बातों की आवश्यकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानक का पालन करते हुए फॉरेस्ट क्षेत्र में क्लियरेंस देते समय जो पूरे नियम हैं उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए। इसलिए इसको स्टार रेटिंग का दर्जा दिया गया है, ताकि विभिन्न राज्य अपने यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार करके निवेश को भी बढ़ा सके और फॉरेस्ट को भी बचा सके। इस निष्पक्षता के लिए इसको किया गया है। ये मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है, लेकिन मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपकी अनुमति से इसका उत्तर देता हूं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट। Sir, thank you, sir. My question is about air pollution, the impact of air pollution. Because of inadequate clearances, it may cause air pollution. That was the intention of my first supplement. Second is the amendment in the agreement to replace the word phase out with phase down. In the UN Climate Change Conference in Glasgow, the ministry pushed for the amendment replacing the word phase out with phase down of unabated coal power. Reasons for the amendments moved, sir. सर, ये प्रश्न फिर मूल प्रश्न से हट करके है, आप कहेंगे तो मैं उत्तर देता हूं। जरूर, अगर आप देना चाहे तो। सर, भारत जलवायु परिवर्तन में जो ग्लासगो में COP26 की वार्ता हुई थी, भारत ने उसमें पूरी दुनिया के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। जलवायु पर ट्रांसलेशन इज अवेलेबल।
प्लीज। जलवायु परिवर्तन का जो COP26 हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने भारत में दुनिया में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 में जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो एक प्रिंसिपल लागू किया गया था, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के सारे देशों ने यह तय किया था कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन विभिन्न देश अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपने लक्ष्यों को तय करेंगे। दुनिया में अभी तक जो विकास हुआ है, दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन स्पेस विकसित देशों के द्वारा कार्बन स्पेस को घेरा गया है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए भारत ने अपने 50% लक्ष्यों को भी वहां पर घोषित किया है, और भारत ने रिन्यूएबल में 40% के लक्ष्यों को प्राप्त भी किया है। लेकिन जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की ये वार्ता चल रही है, तो उस वार्ता के अंतर्गत भारत ने कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन होना चाहिए। इसलिए अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हम फेस आउट नहीं कर सकते, भारत में फेस डाउन करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। ये प्रिंसिपल दुनिया के सभी विकासशील देशों ने स्वीकार किया है, और उसको भारत के द्वारा रखे गए सारे विषयों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मंत्र दिया है, जिस पर दुनिया को आगे बढ़कर हम दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट के साथ बचा सकते हैं, उसी को पालन करते हुए सब लोगों ने स्वीकार किया कि फेस आउट उचित नहीं है, फेस डाउन के माध्यम से ही विकासशील देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। From our learned minister, how much concerned our government is regarding the following facts. As per the data provided by Yale University Environmental Performance Index, out of 180 countries, India ranks 168th. So far the mostly polluted countries are concerned, India ranks 5th in the world. Amongst Asian countries, India ranks 3rd. And unfortunately, out of the most polluted 10 metropolitan cities in the world, India is having 3, and Delhi happens to be the most. I want to know the concern of our government. Thank you. सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रहते हैं, उनके क्या मानक विकासशील देशों के अनुरूप है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी पॉल्यूशन करके कार्बन स्पेस को घेर रखा है, तो उनकी हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इसके अंतर्गत क्यों नहीं जोड़ा जाता है, पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि भारत की जनसंख्या जो है वो दुनिया की 17% है, लेकिन हमारा अगर दुनिया में जो कार्बन एमिशन है वो केवल 4% है। दुनिया में जो कार्बन एमिशन है पर कैपिटा हमारा दुनिया का न्यूनतम है, जो हमारी जीवन पद्धति के कारण है, हमारे विकास के मानकों के कारण है। जहां तक एयर पोल्यूशन का विषय है, हमारी सरकार पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन के लिए के समाधान के लिए कार्य कर रही है। अभी वित्त आयोग के द्वारा लगभग 4400 करोड़ रुपया दिया गया, उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को भी चलाया जाता है। नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम की इस वर्ष हम लोगों ने पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में क्षेत्रीय बैठक करी। ओमिक्रॉन के कारण बाकी बैठक रह गई, लेकिन उन बैठकों को भी आगे बढ़ाने का विषय है। जहां तक बड़े शहरों के पॉल्यूशन की बात है, मिटिगेशन के अनेक उपायों को सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो खपत जो ईंधन की खपत है उसको भी बदलने का कार्य किया जा रहा है। इंडस्ट्रियों में भी पॉल्यूशन के नए मानक तय किए जा रहे हैं। पराली जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए भी सरकार के द्वारा उसका जैव उसको ईंधन में उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान बजट में भी सरकार ने जो दिशा दिखाई है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर देश के विकास करने की दिशा को दिखलाया है। लेकिन फिर भी देश के 132 शहरों में हम लोगों ने एनवायरमेंट पॉल्यूशन के यंत्र लगाए हैं, और जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें हवा के अंतर्गत जो 12 मानक पाए जाते हैं, जिसमें PM2 से लेकर
10 से लेकर नाइट्रोजन से लेकर लेड से लेकर जो 12 मानक होते हैं उनकी मात्रा को उसके माध्यम से किया जाता है और 132 जो शहरों का जो मानक किया जाता है उसके आधार पर ही मंत्रालय के द्वारा उन नगरों को सहायता और उन नगरों को उसके मिटिगेशन के उपायों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के भी जो स्वच्छता मिशन से लेकर के अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी एयर पोल्यूशन के लिए काम किया जा रहा है और आने वाले समय में भी नेशनल क्लीन एयर मिशन को विभिन्न चारों क्षेत्रों में हम लोग रीजनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हम मंत्रालय ने तय किया है कि जब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सांसदों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे ताकि वो भी अपने अपने म्यूनिसिपैलिटी और नगरीय क्षेत्र में जो एयर पोल्यूशन के विषय हैं उसके समाधान के लिए रचनात्मक कार्य कर सकें। डॉक्टर अम्मी याग्निक जी। Ask the Honorable Minister, I have seen the detailed reply and what is happening in the cities on the front of mitigation of air pollution. But is there any plan by the government to ask the cities to collect data on their own for the air pollution that is happening in individual cities so that a central database can be created to see that the mitigation takes effectively? अन्य सदस्य जी का एक अच्छा सुझाव है, लेकिन चूंकि हमें मानक तय करने हैं तो उसका एक समान रूप से उसका अध्ययन होना चाहिए। अगर हम अलग अलग को स्वायत्त तरीके से देंगे तो सबके मानक को क्रिएट करने के और डाटा क्रिएट करने के अपने अलग अलग तरीके हो जाएंगे। इसलिए हमने 132 शहरों में समान मानक के आधार पर यंत्र स्थापित किए हैं, लेकिन नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत मंत्रालय के द्वारा विभिन्न म्यूनिसिपैलिटीज के साथ भी एमओयू करके कार्य किया जाता है। अभी पश्चिम में भी जब हुआ तो महाराष्ट्र की अनेक म्यूनिसिपैलिटियों के साथ ये जो फाइनेंस कमीशन ने राशि उपलब्ध कराई है इसका विभिन्न नगर पालिकाओं के साथ एमओयू किया गया और हमारा ये मानना है कि एयर पोल्यूशन की समस्या को अगर स्थानीय सुशासन स्तर की जो हमारी संस्थाएं हैं, केवल एयर पोल्यूशन का कारण केवल धुआं नहीं है, जो कचरा भी है, कचरे का निष्पादन भी एयर पोल्यूशन का कारण है, स्वच्छता भी एयर पोल्यूशन के कारण में आती है, औद्योगिक उत्पादन भी एयर पोल्यूशन में कारण में आता है, डस्ट भी एक एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, व्हीकल भी एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं का ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग अपनी वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं उसमें हम महानगर पालिकाओं से ही लोगों को बुला रहे हैं। अब हम सांसदों को भी बुलाने की योजना कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री दीपक प्रकाश जी, लोकसभा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में वहां पर लगातार रेडिएशन के कारण वहां जलीय प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण कई गांवों में महिलाओं के गर्भपात हो रहे हैं और साथ साथ में लगभग कई बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो भी मानसिक रूप से विक्षुब्ध पैदा हो रहे हैं। साथ साथ कई वहां के लोगों को कैंसर की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल करिए दीपक जी, सवाल। ये जलीय प्रदूषण, रेडिएशन के यूरेनियम के खान के कारण जलीय प्रदूषण हुआ है और जिसके निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? माननीय सदस्य महोदय ने एक झारखंड के विशेष क्षेत्र का प्रश्न पूछा है और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा है। मैं माननीय सभापति जी उनको उत्तर में, लिखित उत्तर में मैं तथ्यों का पता लगा करके उनको जवाब दूंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21, श्री वेंकट रमणा राव मोपी देवी। Yes, sir. Honorable Minister, first supplementary. Sir. Respected Chairman, sir, I thank you so much for the opportunity given. I would like to bring to the notice of Government of India that and request that since the Andhra Pradesh is blessed with the second largest coastline of 974 kilometers, inland water bodies of 8 lakh hectares and 350 square meters of the mangroves area, there is an environmental scope of establishment of integrated aqua parks, aquarium complexes, oceanaries, sports fishing, tourism boats, water sports for promoting the eco-tourism for employment and income generation of the state, as well as the country. Brief. Our Honorable Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, under his immaculate leadership, is striving hard for... Please be brief in question. Sir, of employment of the largest extent of the state. The Government of India is supporting is the... Venkat Ramana ji,
Please, this is not 0 hour. Please put your question. Sir, this is sir. Question. What is your question? Sir, whether the government has taken any measures of introducing aqua tourism in the state of Andhra Pradesh. Thank you. Please. उपसभापति जी, माननीय सदस्य को बाकायदा लिखित उत्तर में भी जो जवाब दिया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि तटवर्ती परिपथ काकीनाडा और नेल्लूर ये दोनों के दोनों लगभग पूर्णता की तरफ हैं और ये पूरे भी हो गए। दूसरा जो बौद्ध परिपथ के तहत साली हुंडम और बाकी कोंडा बौद्ध परिपथ है वो भी आंध्र प्रदेश में दिया गया है, वो भी पूरा हुआ है। प्रसाद योजना के तहत भी अमरावती शहर और श्रीशैलम दो बड़ी परियोजना है जिनको पूरा किया गया है। मूलतः पर्यटन के प्रचार प्रसार का काम राज्य सरकार का है। मैं और भी अगर वो चाहें तो मैं उनको बता सकता हूं कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को और उपयोगिता को देखते हुए पर्यटन का जो महत्व का प्रदेश है उसमें भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वहां पर सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करने का विचार है। Second supplementary, Mr. Rao. Sir, aquaculture could also the income for the coastal communities and especially fishermen communities. Fish flock should be heavily engaged in the aqua tourism projects. Are you reading something or putting your question? So finish, sir. Question. Please. He has no other question. Sri Vijay Sai Reddy ji. Sir, I would like to know from the Honourable Minister, aqua tourism could be a good source of income for the coastal communities, especially fishing community. Fisher folk should be heavily engaged in aqua tourism projects. Has the Minister had any discussions with the Department of Fisheries and also the respective state governments where there is a coastal line to collaborate on promoting the aqua tourism? Thank you, sir. माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रसाद और स्वदेश दर्शन की योजना है वो तटवर्ती परिपथ के तहत ही वहां पर थी, लेकिन जो पर्यटन अवसंरचना की बात माननीय सदस्य ने की है मैं उनकी जानकारी में कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें ही प्रस्ताव भेजती हैं और उसके तहत पुट्टपर्ती में भी लाइट एंड साउंड शो हुआ है, वो प्रस्ताव वो भी पूरा होने की स्थिति में है और विशाखापट्टनम पत्तन के बाहरी बंदरगाह में भी जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं उसके लिए भी लगभग 38 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिए हैं। मैं विचाराधीन एक परियोजना है सिंहाचलम और अन्नावरम, मुझे लगता है कि जो बात मैंने पहले भी कही है कि राज्य सरकारों की सहमति से ही ये प्रस्ताव हमारे पास आते हैं और मैं मानता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में आंध्र में पर्याप्त मात्रा में प्रस्ताव दिए गए हैं। अन्य जो कार्यक्रम होते हैं जलाशय, उन 4 जलों में भी आंध्र प्रदेश में पैसा दिया गया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 22, माननीय श्री संजय राउत जी। माननीय श्री संजय राउत जी नॉट प्रेजेंट। फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्रियंका चतुर्वेदी जी। Honorable Chairman, sir. Sir, this is with regards to classical language status to Marathi. Many scholars, many historians, the state government of Maharashtra, many MPs across board coming from Maharashtra have made this request repeatedly. I had also put it on the table in the 253rd session. Every time the response is, it is under active consideration. My only question on this particular topic is, how long will this active consideration last? Thank you. Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जैसा कि माननीय सांसद ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये ठीक है कि मैटर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपने देखा होगा कि हमने अब तक जो है 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ये गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन था 2004 का, उसके तहत एक नोटिफिकेशन 25/11/5 को निकला जिसमें गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय को ऑथराइज किया क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा देने के काम को। इसमें फिर हमने एक लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट कमेटी बनाई
इस कमेटी के माध्यम से साहित्य अकादमी में मैटर गया। मैटर बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही निर्णय शीघ्र होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। जैसे ही निर्णय आएगा हम आपके माध्यम से माननीय सदन को, संसद को अवगत करा देंगे। धन्यवाद। माननीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी। उपसभापति जी, मुझे ये पूछना है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर के समन्वय के अभाव में क्या कुछ इस प्रस्ताव में खामियां रही है? ये जानकारी क्या सही है? डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सांसद ने प्रश्न किया है, जैसे मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी इस काम को जांच रही है। निश्चित रूप से क्या होता है कि जब राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो फिर ये मैटर साहित्य अकादमी में गया तो कुछ कमियां छोटी मोटी रहती भी है, वो दूर कर ली गई है। जैसे कितनी पुरानी लैंग्वेज है मराठी भाषा, क्या क्या साहित्य, 3वीं शताब्दी में क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी तक क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी के बाद क्या लिखा गया। मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूं कि मराठा भाषा, मराठा साहित्य, उस पे देश मराठी भाषा और मराठा साहित्य पर देश गर्व करता है, देश गर्व करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक्टिव कंसिडरेशन का जो प्रकरण पहले जो सांसद ने उठाया, माननीय सांसद ने उठाया, सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्दी शीघ्र निर्णय होने वाला है। माननीय रजनी पटेल जी। पाटिल जी, रजनी पटेल नहीं, पाटिल जी कहिए सर। क्या बोल। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से, एक तो मराठी भाषा जो है उसकी संस्कृति और उसकी इतिहास की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। आद्य कवि मुकुंदराज, उन्होंने ये मराठी भाषा का उगम उनसे हुआ था और ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको आगे बढ़ाया था। हमारे नामदेव, संत नामदेव, जिन्होंने ये मराठी भाषा पंजाब तक लेके गए। रजनी जी सवाल मैं ये बता रही हूँ, उन्होंने बताया कि हम अभ्यास कर रहे हैं। आपको सवाल पूछना नहीं, उन्होंने मंत्री महोदय ने बताया, उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको ज्ञान देना चाहती हूँ मराठी भाषा के लिए। नहीं, आप ज्ञान देना चाहती है तो अलग है, सवाल पूछना चाहती है तो मैं मौका दे सकता हूँ। ज्ञान बाहर अलग से दे सकती हैं, आप सवाल पूछे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे भाई विनय सहस्त्रबुद्धे बोल रहे हैं, जब वो हर जगह पर राजनीति करना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि मराठी भाषा सांस्कृतिक लेवल पे लिया जाए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रयास से इसको जल्द ही किस प्रयास में सांस्कृतिक दर्जा देना चाहती है और उसके लिए क्या करना चाहती है? धन्यवाद। ये हम पूछना। धन्यवाद। चेयरमैन सर, जो मैंने पहले जिक्र किया कि मराठी भाषा और मराठा साहित्य, मराठा इतिहास, इस पर गर्व है हमें। हम जल्दी ही इस पे निर्णय करने वाले हैं। आप इस पे आप ये शंका मत करिए कि हम जो आप ज्ञान दे रहे हो उससे ज्यादा ज्ञान हम भी रखते हैं। हमने खूब पढ़ा है इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होता है डिप्टी चेयरमैन सर, तो उसमें समय लगता है। MHRD का भी संस्कृति मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कई मंत्रालयों के बीच में इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत जल्दी सकारात्मक निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 23, श्री रामचंद्र झांगरा जी। माननीय रामचंद्र झांगरा जी नहीं है, अनुपस्थित। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय केसी वेणुगोपाल जी। The government is nowadays taking action against some particular channels on citing these anti-national activities. We are also very much keen about the anti-national activities for some channels is happening. We are also very much concerned about it. But the complaint in the public domain is, sir, the government is misusing this penal code to suppress the freedom of expression in the country, freedom of the press in the country. Recently, one of the channel, Media One, has been given a direction to stop the telecast for the IP by citing the same security issue. Whether they have done anything wrong
We would like to know this. Thank sir. you. From the government, we would like to know what is the crime they have done. Thank you. Thank you. Please, no, please. Respected Deputy Chairman, sir, our government is concerned about the freedom of speech and freedom of expression. I want to convey, Honourable Member, we are not in 1975. We are not in emergency. We are in bright and speed under the Modi government. Please. Sir, I am coming to my answer. Sir, आप तो सुनो तो चाहिए. Please. वेणुगोपाल जी, आप तो मेरा answer तो सुनो. Answer to suno. Take your seat, please. You have to listen my answer. Please take your seat. See. Please. Please. Sir. Please. Sir, Venugopal ji. Please. Sir, Venugopal ji's question is that media one. Sir, that media one, we are not doing anything. Sir, whatever the channels permission is we are giving, under the security clearance, the channel has to be get security clearance from the Home Ministry. If they get security clearance, we will give. And apart from this, the media one is sub judice matter also. I want to convey this. And also, sir, within 2 months, our Venugopal ji, please take his answer. Sir, please. within 2 listen, months, madam, listen, please. Within 2 months, our government initiated actions against 60 channels. Those content, I'm not reading. Those, they content against Nothing the nation is going on record. and Make a content mistake, please. against the integrity of the nation and content against the safety of the country. So we can't tolerate. We are taking, for example, 60 channels. It is in YouTube channels and Twitter and Facebook account also from the Pakistan channels. 60 channels we blocked for they disturbed the nation's security. The peace also. That is the thing. Thank you. Lieutenant General D.P. Vats retired. D.P. Vats from Lok Sabha chamber, sir. Lok Sabha chamber, sir. आप अपना सवाल पूछे. Through you, I will like to ask the Honorable Minister, sir, what about action against the people who come on media and use the filthy language? And the channels which give fake news? I would like to know action only initiated or it culminated into punishment also. Thank you. To convey through this Augustus to the member, again I am telling, we are concerned about the freedom of speech and freedom of expression. See, the Press Council of India is there. Sir, there is three-tier mechanism is there. सीट पर बैठकर बात न करें, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा. Three-tier mechanism is there. One is self-regulatory. Then self-regulatory bodies can take. If the grievances is not sorted out, then only inter-department committee is going to take the grievances and we sort out the grievances. In this, I want to tell this, 160 cases we initiated against the TV channels. Time is over, channels. Minister. Now time is over. Please. Now discussion on motion of thanks on the President's address. Honorable Sri Thambi Durai ji, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving the opportunity to speak on the subject. On behalf of ADMK party, I raise to thank the Honorable President's address to the Parliament, which listed the achievements of Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the government led by him, including achievements in the healthcare, infrastructure, defense, farming, startups and others. At the outset, I congratulate the Modi ji government
for its successful fight against the COVID-19 pandemic and thank the central government for extending meaningful support to the efforts of all the governments in India. Sir, I want to once again thank our Honorable Prime Minister. When ADMK government was in power, when the first phase of epidemic took place, at the time, government extended a lot of extension to our former Chief Minister Edappadi Palanichami, who did marvelous work to tackle the pandemic situation at the time. Sir, at the beginning of the COVID-19 pandemic, we were all thought, don't know what is going to happen. Most of the even developed countries worried how to tackle this issue. But at the time, when the world silence, please. Worried about that, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, who took quick decisions and firm implementation of the measures in containing the spread of the virus. As Honorable President mentioned in his address, the proof of India's capability to fight against COVID-19 has been witnessed in the vaccination drive. The rupees 64,000 crore Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission is preparing the countries for future healthcare crisis. I should like to make a special mention of the wonderful action taken by the ADMK government in Tamil Nadu under the leadership of Thiru Edappadi Palanichami and Thiru O. Pannirselvam to protect the lives and livelihoods of the almost 8 crores of the population of Tamil Nadu at that time, sir. Sir, ADMK government, during its period, pandemic situation, provided each cash assistance of rupees 5,500 rupees, provisions and food grains to more than 1.2 crore families for within 8 months, and separate payment of rupees 2,000 to Labour Welfare Board members, weavers, and to several lakh migrant workers. For several months, nutrition food, cooked and prepared, was given free of cost through the hundreds of people through Amma canteens in the major towns in the cities of Tamil Nadu. Medical help was readily made available to millions of COVID-affected people in Tamil Nadu. Excellent treatment was provided to all in the need. Indeed, an exemplary work was in force during the time of ADMK government, headed by Edappadi Palanichami, and take the opportunity to thank the central government for the support it provided for us at the time. Sir, we have administered 150 crore vaccines in less than a year. More than 90% of adults have received at least one dose of vaccine, while more than 70% have been fully vaccinated, and the third dose of the vaccine is being administered effectively. I most congratulate our Honorable Prime Minister Modi ji government for this monumental work executed effectively. Sir, India has emerged as a role model for the world in providing health care and affordable medicines to the people through Pradhan Mantri Bharatiya Jan Ayushman Yojana, and as it has set up 8,000 kendras to provide the poor with affordable medicine. It is very important to note that our country has exported Ayush products worth 11,000 crores to foreign countries. Sir, and also, you know very well, even though we faced not a problem, epidemic problem, during the Honorable Prime Minister Narendra Modi period, in 8 months between April and November 2021, foreign direct investment of 48 billion was made in India. Our foreign exchange reserve exceeded $630 billion US. Because of the Jan Dhan accounts, Aadhaar and mobile connectivity, people have benefited from direct cash transfer during the pandemic. More than 44 crore people have joined the bank system
These are all not small achievements. Sir, in the area of agriculture and food distribution, our country has set new records under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. Rupees 1.8 lakh crores have been transferred to more than 11 crore farmers' families. More than 1 lakh crore rupees have been paid as compensation to around 8 crore farmers. 6 lakh hectares of land has been developed with irrigation facilities under the various schemes of the central government, and I register my appreciation for these historic achievements, and as I am also the son of the rural small farmer from remote village of Tamil Nadu. The collateral-free loans given to the 13.5 lakh medium, small and micro industries have helped to keep the economy and core sectors production more. The huge emphasis of this government on the development of infrastructure and transport will accelerate overall growth of the country and generate new job opportunity for several lakh workers. So I must especially appreciate this government for rupees 65,000 crores financial through our banks given to 25 lakh women's self-help groups. Sir, in the line with the politics mentioned by our policies, in the line of the policy mentioned by our Honorable President, our Finance Minister, Tirumati Nirmala Sitharaman, has announced Godavari Krishna Pennar and Pennar Kaveri river linking has been finalized. Sir, this proposal of interlinking of rivers to transfer surplus waters from Godavari Krishna Kaveri is a right decision. Our ADMK government has worked hard for it. I thank the central government for accepting our proposal, and I hope the project will be successfully completed in the next few years. Sir, at this juncture, I draw the attention of the government of India, the plight of the Indian fishermen from Tamil Nadu, from my state, who are continuously harassed, attacked, looted, and brutalized by the Sri Lankan Navy in the Bay of Bengal and the Gulf of Mannar. I plead that our government take a firm policy decision to safeguard the interest of our fishermen and protect the livelihood of lakhs of poor fishermen folks. Sir, you know very well, recently the Sri Lanka government seized the boats of the Tamil Nadu fishermen. They are going to announce they are going to auction it. This is an unfair thing, sir, because our poor fishermen, they have gone, and without such a knowledge, something would have happened. But I request the central government to take necessary steps to get back the fishing boats of our Tamil fishermen. Sir, and also, sir, this is the only way to settle this issue, you know very well. And the way of stopping the menace could be retrieving the Kachetivu. This is the very thing, sir. You know very well in West Bengal also, when certain islanders given to Bangladesh, at that time it was passed by the parliament. But Kachetivu is not done like that. It is arbitrarily given at that time when Madam Indira Gandhi was the Prime Minister to the Sri Lanka, but not ratified by the Parliament. Therefore, still Kachetivu is the part of Indian territory. Therefore, it is high time to see that we have to fight and get this Kachetivu to solve the fisherman issue. Otherwise, Sri Lanka is now, you know, they are moving towards China. That is the relations going on. It is a threatening for our Indian security. Therefore, whatever the Chinese government is doing, not only in Arunachal, other places, even Sri Lanka also, they are trying to enter to give threat to our Indian thing. Therefore, it is high time to see that we have to take that action also, sir. Sir, and also, regarding the mentioned governance thing, sir, President address, this is the 150th birth anniversary of Vavu Chidambaram Pillai is going to, and also 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Gopi, they are going to celebrate it properly. I am very thankful for the central government to come forward to the freedom fighter who navigated the ships for a British period. You lost all the life and wealth of Chidambaram Pillai. To honor that, the government has come forward. Appreciate for that, sir. Regarding, sir,
regarding the NEET examination. So this is known very well. We are all raising, especially Tamil Nadu, all the parties, to get the exemption to the NEET examination, because the NEET examination affects our medical students, aspiring medical students, rural people, especially rural students, they are studying there. So as long as education is there in concurrent list, this problem will occur. When that has come, you know very well. 1975, 70, 76, 77 period, emergency period, at that time former Prime Minister Indira Gandhi brought this education from state subject to central concurrent list, brought that at that time. After the government, Morarji's government came, Morarji government changed many things, withdrawn the many bills, but the education, that government also allowed to continue concurrent list. Because of that subject is concurrent list, we are tight, central government taking many laws. At the same time, state governments are going down. Therefore, it is high time I request the government to rethink it, because they announced in the President address, they are going to start nearly 200 channels of giving education for the people, and also they are going to conduct programs like professional courses, like engineering courses in regional languages. When that is the case, when we are going to promote our other languages, which is in the 8th schedule, most of the languages of that 8th schedule, including Tamil, your Bengal, all must be made, Bengal language, all must be made as a national language and an official language of this country. That is our demand. We are going raising that. That has to be done. Then only we get the equal opportunity. And also when you are conducting the all-India examination, when you are writing, the state must give them the more power to see that professional admissions, courses admission, such as medical courses, is given more to the state government. That is why our party, ADMK party, go on requesting many times, meeting the central minister, honorable prime minister, and asking that to help the rural people, especially students. It has, otherwise, what is going to happen now? There are more coaching classes started, professional course started. Lakhs of money that people are paying and to get that kind of education to enter the NEET examination. But poor people cannot do that. That is why we are asking the exemption for that. Therefore, I think the central government consider all these things, sir. And also, our honorable Prime Minister has mentioned, as in the President address, mentioned honorable Prime Minister's vision for that the government is moving fast on building a strong foundation for the next 25 years following the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, our Sabka Prayas. Sir, creating India which includes all benefits, all which has to be self-sufficient, sir. These are, I am very happy to note that this, our Prime Minister, Narendra Modi ji, has come forward this kind of vision which is going to help our country. Therefore, I am very thankful for giving the opportunity, and also once again I thank the Modi ji government and Modi ji and others, and who have taken long kind of steps to see that India is going to develop for that. I thank once again for the President's address. Thank you. Thank you. Sri A.D. Singh ji. Thank you very much, Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak. I rise to thank the respected Rashtrapati ji for his very comprehensive listing of the achievements of the present government and the way forward. Indeed, the catalogue and success and achievement are impressive, and I congratulate the Prime Minister and his team for these successes and also the work in progress. This success will be even better if it was accompanied by social cohesion and unity. Unfortunately, the nation's progress is slowed down by divisions that we see emerging in society. This needs immediate course correction. This reminds me of an anecdote from Gandhiji's visit to St. Stephen's College, as reported in the college magazine of 1915. According to this story, a sadhu came to another iconic leader of our freedom struggle, Sri Gopal Krishna Gokhale, to make suggestions that would suppress a minority community.
Gokhale rejected this specious religious reasoning by saying that if to be a Hindu he has to do what has been suggested, then he be better known as a non-Hindu. Rashtrapati ji said that the government is committed to counter the forces challenging the sovereignty and unity of the country at every level, and strict action will be taken against the forces inciting violence. I urge the government to inform the House actions that have been taken so far against those who publicly called for genocide and targeting specific communities. The House will support strictest of action against all such individuals, irrespective of their political affiliations. A strong government cannot be seen as cowing down to a handful of fringe elements who are sowing discord in our society on a daily basis. We pay tribute to the 20 brave hearts who made the ultimate sacrifice to defend every inch of our land in June 2020. But the threats have not diminished. More conflicts have arisen, and despite regular talks, there are no signs of illegal occupation of our land ending anytime soon. The famous salami slicing policy is in action, and our response has been muted. I need not remind the government that such silence only encourages the aggressor, who sees this as a sign of weakness. In addition, our half-hearted economic countermeasures have been ineffective. Our trade deficit with our main challenger has reached a very new high last year. Protection and unity and sovereignty of the nation is not the work of one individual. It is also not about seeking personal glory. It is national unity. I would like to pay tribute to late General Rawat, our first CDS, but I am disappointed that such a sensitive post has been lying vacant since the tragic accident. I would urge the government to find his successor quickly. It appears that the government has no succession plan or proper personal planning if one sees the number of high-level posts lying vacant in the executive and the judiciary. In the speech dealing with foreign policy, I noticed a significant omission. Momentous changes have taken place in our neighborhood when a government in Afghanistan was toppled and its friendly people have been brought under an extremist regime that denies all human and basic rights, has dragged the country into unprecedented humanitarian crisis. Historically and including under this government, India has always stood with the people of Afghanistan and helping them in all possible manner rather generously. Our humanitarian assistance is still reaching Kabul. Given our traditionally close relations and brotherhood that Afghans feel for India, we would urge the government of India to stand firmly with the people of Afghanistan and facilitate travel and trade and continuing education of Afghans in India. The policy so far has so far been left much to be desired. In fact, even today's scores of Afghan students are stranded in Kabul without a visa, denying them the possibility of coming back to the colleges. Their future is being put on hold. Our policy will need to focus on the people, and we should be using our influence to ensure the regime in Kabul works towards forming an inclusive national government. Otherwise, it is feared that Afghanistan will become a playground for radical and anti-India groups. Please conclude. India will have to learn to stand with its friends. If not, we will be repeating the historical mistake of once letting down our friendly people of Tibet. It is well documented that the Tibetans never accepted the sovereignty and suzerainty of the Chinese. Even Nehru, who is much loved by the current government, advised them to approach the UN and sent a young military officer, Zorawar Bakshi, to undertake strategic military reconnaissance in Tibet in 1949. Things did not turn out as planned, and rest is history. Please conclude. However, the nation faces long-term consequences, both action and inaction. In this increasingly multipolar world, India will have to align itself with its own national interests in its own neighborhood and beyond. Thank you very much. Thank you. Shri Birendra Prasad Vaishya ji. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to discuss on the subject. I raise here to thank His Excellency, President of India, for his presidential address. Sir, in his presentation, President very rightly mentioned during this period
our development in the health sector, our development in the infrastructure, agriculture sector, sports arena, everything Honorable President has described in his address. Sir, I must compliment Prime Minister Narendra Modi ji and his government because within a year our government successfully given 70% adult population of the fully vaccinated. Sir, India is a big country, and within this first span of time, sir, 150 crore Indian citizens is vaccinated, sir. When vaccination started, sir, every part of the world, they have discussed how it's possible India to implement this project because India have a huge population. But this government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, it is clearly justified that India is doing everything, India can do anything, and it is a great success for Indian government. 75%, more than 70 senior citizens of the country, adult citizens of country, is vaccinated. Sir, in health sector, sir, within this year, our country has developed in marvelously well, sir. Sir, we remember in the first wave of COVID, sir, India is crying for sanitizer. There's shortage of masks. There's shortage of medicine. But, sir, within this year, India developed anything. We produce sufficient masks, sir. Now we can export. We have produced our vaccine, and now we can export, and we produce the medicine also. This is the successful of this government. I must compliment health sector. I must salute all the health workers for their great successful, sir. Sir, another great achievement of this government is, sir, agriculture sector, sir. Government has given almost priority in the agriculture sector, sir. And during this year, COVID period, what a worst condition faced by our people, urban area, rural area, farmers, everybody faced the problem. Although there is a COVID, sir, 30% agriculture produce has increased during the period, sir. Sir, not only that, sir, 33%, sir, horticulture production also increased, sir. But I must compliment this government, sir. The government procured more than 430 lakhs metric tons of the wheat during the Rabi season, benefit about the 50 lakhs farmers, sir. And record quantity of about 90 lakhs metric tons of paddy was procured during Kharif season, sir, benefited 1 crore 30 lakhs people. This is the achievement. This is the achievement of the government. Not only increase the production, farmers are get benefited, farmers are get their price. Instead of going other place, government has given enough money and government procured this product. I must compliment Narendra Modi ji for this successful India. Sir, not only that, sir. Country should remember one thing. During the COVID period, Indian agriculture products is increased like anything else. This is one of the greatest achievements, sir. Secondly, sir, one more thing, sir. I am coming from Assam, sir. During this period, Assam also export agriculture product to the neighboring foreign countries, sir. This is the achievement of our government, sir. Sir, one more thing. I like to say, infrastructure development. We always speaking of the infrastructure. Through the Bharat Parijojana, sir, infrastructure development is achieved in every part of the country, sir. Sir, if I'm not speaking about the Tokyo Olympic, it will be incomplete, sir. I'm happy to say that, sir, I lead the Indian contingent Tokyo Olympic Games. I was the chief of the mission for Indian contingent, sir. And India, for the first time, India is making history. India getting all type
record medals in Tokyo Olympic Games, sir. Sir, in the athletics, earlier our Bindra got the medal in the shooting. In athletics, for the first time, Indian athletes got the gold medal, sir, in the athletics. I must congratulate him, sir. Sir, northeastern region is the very intricate part of our country, sir. Sir, it is long way from Delhi, sir. From Delhi to Guwahati, it is more than 2,000 kilometers, sir. Other northern, it is more than 2,700 kilometers, sir. But, sir, this Narendra Modi government has given well transportation system, well railway system to the northeastern region, sir. And today, I am proudly said, sir, all the capital of northeastern region today, railway connectivity is there. Every part of the northeastern region have a railway to there. There is a better air connectivity is there. And recently, the shipping minister has announced there will be water route connectivity will be started very soon, sir. Sir, Assam is famous for tea pollution, sir. India is getting huge currency, foreign currency from the tea, sir. And small tree grower of Assam played very important role for the tea production of Assam, sir. So small tree growers, they are not only produce the tea, sir. They are successfully resolve certain extent of unemployment problem in Assam, sir. So to encourage tea industry, to encourage small tree grower is the call of our. Although government has took some initiative to develop the tea industry of Assam, I specially request through this presidential address, through you, sir, I request Honorable Minister to government, sir, look after this issue and they should give a priority, topmost priority to the small tree growers is our country in the interest of the Indian economy, in the interest of the northeastern region's economy, in the interest of the Assam economy, and especially in the interest of the curb the unemployment in our country, sir. Sir, one more thing I like to say, sir. Assam is a oil producing state, sir. Assam have a huge quantity of oil and national gas, sir. And I like to request government, through you, sir, please establish some better there is a lot, this government has taken lots of initiative. This government has given more than 3,000 crore rupees for the expansion of the Numaligarh refinery. This government is taking initiative to biofuel gas production Numaligarh refinery, to export oil products from Numaligarh refinery to the other parts of the world, sir. But I like to request you, sir, some more social activity for the petroleum ministry should be started in Assam, sir, because we are an oil producing sector and this oil sector have a huge amount of money and they have a special responsibility, special community responsibility fund is there, sir. I like to request through government, through you, sir, I like to request government to take some initiative, given some more money in the social responsibility scheme to the northeastern region, to build some more hospital, infrastructure project, etc., especially, sir. According to report of the World Health Organization, maximum number of cancer patients of our country is from the Assam and northeastern region, sir. I like to request you through you, to the government, to the ministry, please establish some special modern super specialty hospital, especially in Upper Assam, from the oil responsibility fund. I think if this will be done, definitely it will not only benefit from Assam, it will benefit Assam and northeastern region. With this word, sir, I totally support the motion moved by the Honorable Minister to thank the President. I totally support the move. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Sri Mukhtar Abbas Naqvi ji. उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। उपसभापति महोदय,
देश ने इन 7 दशकों के अपने सफल सफर में बहुत से ऐसे लम्हे भी देखे हैं, बहुत से ऐसे मौके भी देखे हैं जो कि इस देश के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। मैं इन 7 दशकों के इस इतिहास भूगोल में नहीं जाता। मैं इन 18 वर्षों के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन आया, मैं आपके माध्यम से वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। आज सभापति महोदय, कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान 2 हो गया है। आज इस देश में 2 भारत चल रहा है। हमारी समझ में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। 2 भारत तो मैंने कभी न सुना है न देखा है। लेकिन हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने के लिए, संस्कार को समझने के लिए, संकल्प को समझने के लिए और समावेशी सोच को समझने के लिए हमें इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर और सोच से बाहर निकलना होगा। जब तक हम इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, जब तक हम कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक हम अपने हिंदुस्तान के उस गौरवशाली संस्कार को, उस सनातनी संस्कृति को, उस संकल्प को मुझे लगता है कि समझ नहीं पाएंगे। आज हमें इस बात का गर्व है, हम सबको गर्व है, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी राजनीतिक विचारधारा का है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की इस मट्टी पर हम सब गर्वान्वित हैं। गर्व करते हैं कि हमारा ये जो एक संकटों का, कंटकों का सफर रहा है, वो सफल भी रहा है और आज दुनिया में हिंदुस्तान ने अपनी एक धाक भी जमाई है। मैं इन 18 सालों में जो बदलाव हुआ, मैं एक एक करके, मैं 18 सालों में कम से कम 28 ऐसे बदलाव हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, और तो बहुत हैं जो और भी साथियों को ध्यान में होगा। जो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश ने महसूस किया, वो इस देश ने महसूस किया, इस लोकतंत्र में, इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में प्रधानमंत्री पद के इंस्टीट्यूशन की गरिमा, क्रेडिबिलिटी और सम्मान बहाल होना। एक आप शेर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। उपसभापति महोदय सुनेंगे, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज से 8 साल पहले क्या स्थिति थी? प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं और से चलता था, प्रधानमंत्री जी को निर्देश कहीं और से मिलता था, और वही नहीं, कैबिनेट जो डिसीजन करती थी नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसे फाड़ दिया जाता था। आज जो बदलाव हुआ इस देश में, कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। ये बदलाव मैंने आपको पहला बताया। मैं दूसरा बदलाव बताना चाहता हूं सर। मैं दूसरा दो बदलाव आया है सर, कि हम जो है वो 8 साल पहले के जो किस्से कहानियां सुनते थे इस हाउस में, हम सब ने उस माहौल को भी देखा है, उन हालात को भी महसूस किया है कि हर दिन किस तरह की चर्चाएं होती थी, करप्शन से लेकर के ये जी, वो जी, फला जी, दिमाका जी, ये सब कुछ सुनाई पड़ता था। आज हम जब सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान हो गया है। एक हिंदुस्तान जो है वो सनातनी सोच का है और एक हिंदुस्तान सामंती सोच का है। तो ये सोच और नजर और नजरिए में फर्क है।
सर तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने इस महसूस किया, आदरणीय नेता विरोधी दल भी आ गए हैं, उनका भाषण मैंने पूरा सुना था। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत को पर रोक लगी है। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। यह हुआ पांचवा परिवर्तन। सर ये छठा परिवर्तन जो है, जो महत्वपूर्ण है, हम सब दिल्ली में बहुत वर्षों से रह रहे हैं, सुनते रहते थे कि साहब ये दिल्ली में ये नेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस है, ये इंटरनेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस है, जहां से किसी भी सरकार का कोई काम आपको कराना हो तो उस इंटरनेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस के से आप करा सकते हैं। आज जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी की गई है। ये फर्क है मोदी जी के आने के बाद का। सर जो सातवां फर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आज इस देश की राजनीति और इस देश के सियासी संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज परिवार के सियासी परिक्रमा नहीं बल्कि परिश्रम और पराक्रम की संस्कृति ने जन्म लिया है। आज परिवारों की पॉलिटिकल परिक्रमा के आधार पर देश की सरकारें और देश की सियासत तय नहीं हो रही है, बल्कि परिश्रम और परफॉर्मेंस, परिश्रम और परिणाम के आधार पर इस देश की संस्कृति, सियासी संस्कृति और संस्कार को नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। यह फर्क आया है, नवा फर्क। सर 10वां फर्क क्या है? जो लाल बत्ती कल्चर हुआ करता था, उसका रोब, उसकी धमक, उसका खौफ, वो आम आदमी को चढ़ाने लगा था। आम आदमी को लगता था कि ये तो लाल बत्ती इतनी इतनी करता हुआ आया, ये तो हमारे ऊपर सारा रोब जमा रहा है, हमसे कोई सुपरमैन है ये। उस लाल बत्ती कल्चर को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया और इस रोब की जो राजनीति थी, जो ध्वंस की राजनीति थी, उस पर विराम लगाया। ये फर्क है, ये 10वां फर्क है। उसके अलावा सर कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। मैं इसलिए कहता हूं, वो जानते थे कि अधिकार देने वाले नहीं हैं, लेकिन कहते जरूर थे। इसीलिए कहा हमने कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण का छल था उसको हमने समावेशी और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। कि एक देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय का अधिकार है। मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का है। उसकी आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आनी चाहिए। ये परिवर्तन 11वां है सर एक और परिवर्तन है, जो कोटा, परमिट, कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या राज चलते थे। इस पूरे के पूरे देश की जो गरीबों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए, गरीबों के विकास के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की तरक्की के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, कभी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से पैसा चलते चलते घिस करके और कितना हो जाता है। आज वो घिसने की रफ्तार खत्म हो गई है। डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो किसानों को हो, मजदूरों को हो, महिलाओं को हो, बुजुर्गों को हो या समाज के किसी भी वर्ग को। ये एक फर्क आया है कि रुपए घिसने की जो गड़बड़ झाला था उसमें रोक लगी है। सर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा कि हमारे देश में
12वां मैं बता रहा हूं कि जिसमें कि हमारे देश में कानून हम लोग बनाते रहते थे, बहुत झगड़े भी करते थे कि साहब इस बिल पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इस बिल पे 2 घंटा होगा, 10 घंटा होगा, 5 घंटा होगा, बिल बन गया। अब बिल का ढेर लग जाता था, कानून बन जाते थे। एक ही चीज पर 10 क्रिमिनल कानून बन गए, और उसके बाद उनमें से जो है वो हमने, जब मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम मैं देख रहा था सर, तो मैंने निकलवाया कि ये बिल इतनी पार्लियामेंट ने पास किया, इतना समय लिया, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने उसमें अपने अपने सुझाव दिए हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने या सिलेक्ट कमेटी ने उस पर अपनी बात कही होगी, लेकिन हुआ क्या उसका? तो पता लगता है कि साहब बिल तो जो है वो 12 साल पहले, 13 साल पहले बन गया था, रूल ही फ्रेम नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है अभी। यानी कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने उसे पास कर दिया, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। ऐसे 1500 से ज्यादा बिल जो बिल की प्रभावी नहीं थे, लेकिन बिल की शक्ल में किताबों का हिस्सा बने हुए थे, उनको रिपील किया। मोदी जी ने आकर के कानून जहां जरूरत थी बनाया भी, और जो जिस कानून की जरूरत नहीं थी उसका खत्म भी किया। ये बदलाव आया, 14वां बदलाव सर एक और बदलाव, जो बहुत बड़ा बदलाव मैं मानता हूं कि जो कि हर देशवासी को गर्वान्वित करने वाला है, ये जो दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना होता था, उस पर रोक लगी है। उपसभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना कि देश का कोई हिस्सा, भागलपुर से भिवंडी तक देख लीजिए, गुवाहाटी से लेकर के और आप वाराणसी ले जाइए, देश के किसी न किसी हिस्से में जो है वो दंगा फसाद, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता रहता था, और देश जो है इन दंगों की आग से बेचैन रहता था। और उसके साथ साथ आतंकवाद महीने में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, कभी जो है वो दिल्ली के लाजपत नगर में आतंकवादी धमाका करते थे, तो कभी मुंबई में धमाका होता था, तो कभी गुवाहाटी में धमाका हो जाता था, हैदराबाद में धमाका होता, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां महीने 2 महीने में आतंकवादी बेखौफ होकर के आतंकवादी अपनी हरकतें ना करते हो। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया, जो उन्होंने संकल्प लिया कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और यह दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान अपने देश के लोगों की, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के संकल्प से लबरेज है, भरा हुआ है। और इसीलिए हमारे पड़ोस के ने एक हिमाकत करने की कोशिश की थी। इस बीच में हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की, घुस करके चूहे की बिल से निकाल करके आतंकवादियों को तबाह किया। अफसोस कि उस समय भी हुआ था, जिस देश ने उसे प्रायोजित किया था वो हमसे सबूत मांग रहा था। हमारे कुछ यहां के साथी जो है सवाल पूछ रहे थे, उस समय भी सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर। यह बदलाव हुआ सर। तीसरा 18वां बदलाव सर, हमारे देश में जो है वो हमारे देश के तमाम महापुरुष, महानायक, जिन्होंने कि हमारे देश के हिंदुस्तान के निर्माण में, हिंदुस्तान की आजादी के लिए आज हम अगर सुकून के साथ इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन तमाम महापुरुषों का ये देश ऋणी है जिन्होंने की कुर्बानियां दी। परिवार के परिवार उनके जो है वो तो उन्होंने कुर्बान कर दिए अपने। हम लोग जब गाना गाते हैं कि जरा आंख में भर लो पानी, जरा याद करो कुर्बानी, लेकिन दिक्कत आई कि हमारी इस देश की कुर्बानी को भी परिवार के पालने में समेट के रख दिया गया।
देश के जो महानायकों ने कुर्बानी दी थी वो सीमित कर दी गई। मोदी जी ने आने के बाद जो फर्क हुआ कि हमारे जो लाखों महानायक थे, नायक थे, जो इतिहास के पन्नों में कहीं पे इग्नोर कर दिए गए थे, उनको सम्मान दिया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि जो पहले थे वो हैं, लेकिन ये भी हैं जिन्होंने कि देश के लिए खून बहाया है, देश के लिए कुर्बानी दी है। आज तुम इस देश में गर्वान्वित होकर के अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हो तो इनके ऋणी हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया गेट पर आप देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुनिया की सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा गुजरात में है। महू, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक, एक लंबी श्रृंखला है। तो हमने जो है उस देश के नायकों और महानायकों को परिवार के घेरे से बाहर निकाल करके और हिंदुस्तान के घेरे में रखा, बताया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि वो तो थे ही, ये भी हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये परिवर्तन सर आया है। सर, एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो अभी कल मैं सुन रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, फला फला फला, वो बिल्कुल नाकारा हो गए हैं, बंधक हो गए हैं, एक तरह से उसका कहना था। सर, मैं आपका बड़ा अनुभव है, आदरणीय नेता विरोधी दल का बहुत अनुभव है इस देश के पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, इतिहास का। एक वक्त वो था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते थे और उस सुप्रीम कोर्ट को के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल होता था। कई ऐसे फैसले हैं। मैं लेटेस्ट फैसले आपको मैं 3 तलाक का बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 तलाक एक क्रिमिनल कुरीति है, कुप्रथा है,